हाय गुड इवनिंग, हाउ यू डूइंग। आज हम लोग करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स के सब्जेक्टिव सवाल जो एनसीईआरटी में है। अभी तक आपने सारे सवाल होपफुली ऑलरेडी कर लिए होंगे। दिस मे बी जस्ट अ रिवीजन। अगर आपने नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू रियली शुड बी डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस बिकॉज नीट में सवाल यहां से डायरेक्टली आते हैं, या तो सॉल्व्ड एग्जांपल या तो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। खैर, हम लोग जो चैप्टर के एंड में होता है ना, सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, सॉरी, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। You'll see something interesting in the description, by the way. We'll talk about that just after this. By the way, how's it been? I know there was a small break because हम लोग एक सेशन कर रहे थे, something called JEET, जीत, जेई की तैयारी. I know, very interestingly named thing. But yeah, what are you up to? Good evening, hello, hello. Rajanya, Teesraj, Ashwini, Pampa, Harsh, usual suspects. Snigdha, sorry. Super duper, Aditya. What's up? I'm great. आप लोग कैसे हैं? How confident are you on a scale of 1 to 10? This is your chapter, right? This is your chapter. Biomolecules, heavy thing. You guys know this inside out, so it should be easy for you. और amines, I think if you have survived carboxylic acid, amines तो हो ही जाएगा. Carboxylic acid के कुछ reactions ऐसे हैं जो amines के साथ भी होंगे. Dehydration होता था carboxylic acid में, 2,4-DNP test, this test, that test, right? Amines is the other end of it, right? अमीन से भी एक हाइड्रोजन निकल सकता है, उसके साथ हम अमाइड लिंकेजेस फॉर्म. विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ यू डूइंग? लॉन्ग टाइम, आई नो. सैफ, हर्ष, तनु, आदित्य, व्हाट्स अप? So before I get started, I told you we are doing something called G, which is JEE की तैयारी. We are doing something very similar for you, for the NEET students. Description में link है. It's called NEET की तैयारी. Look at that. I love that. There's that line. What is that line called? The squiggly line. आपको मालूम है क्या? You know, like the heart rate monitor. Anyway, we are doing this for you guys. And the dates क्या है? April 18th to 22nd. Yeah, this 24th. My bad. 24th April. As usual. Oh wait, no, this is new to you. So let me explain. 5 दिन का कोर्स होगा. एवरी डे 1.5 घंटे की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की. एवरी डे. एंड ऑब्वियसली बिकॉज नीट इज बायो हैवी, more classes of bio as compared to chemistry and physics. We'll give you the details. The most important thing is you're going to have FaceTime with us. You can just turn on your mic and talk to us. If you have been attending the Aakash live classes, it's going to be on that same platform. Okay. But this is going to be focused towards NEET. So you can talk to us. If you have any doubt, just talk. You're going to have access to the app, everything on the app till the exam itself. NEET ka exam jab tak hai. And all of this is, yeah, this is the price. I think it's for $4,000. Everybody gets a code of get10. You can also use codes of my name, Ankita's name, Abhishek's name, and put a 500 after it. You can use only one of those three, okay? And this is the, you'll get a bit of a discount, and this is what you'll get at. Anyway, so NEET की तैयारी आप लोग तो कर रहे हैं, हमारे साथ भी कर लीजिए. 18th to 24th April. All right. Shall we start the questions right now? Let's go with the first question. 8.5, Rajanya, that's a very good score. Amines and Biomolecules best. Okay, sweet. Electrocardiogram, ECG. Thank you for helping with that. ECG के hard for you. All right. I'm great, Harsh. How are you doing? Tanu, hi. तो चलो, पहला सवाल करते हैं. Okay. Give one chemical test to distinguish between the following pairs of compounds: methylamine and dimethylamine. क्या टेस्ट होगा यहाँ पे? Yeah, all right, super. You could check it out, yeah. Thanks for that. Check it out if you guys want it. Use those codes. Get the course. Will be fun. Seth, it'll be on the Aakash BYJU'S platform. मतलब आप इसको अपने टैबलेट पे, फोन पे, कहीं पे भी देख सकते हैं. You'll get access to the Aakash BYJU'S app completely. I'll talk about it again at the end of the session. Let's start. अभी हम लोग सेशन करते हैं. ये हम लोग सेशन के एंड होगा. फिर से for a minute I'll talk about it. If you have any doubts, please ask me then, and we'll chat. Yeah. Carbylamine, Sunshine. I don't think I've met Sunshine before. That's an awesome name. And Piyush, absolute right. Aditya, isocyanide. Hey, what is the difference between carbylamine and isocyanide? मुझे तो दोनों सेम लगते हैं. But how do you differentiate between them? एक और टेस्ट भी हो सकता है ना? कौन सा टेस्ट? उसको क्या बोलते हैं? जो सेकेंडरी अमीन के साथ ही रिएक्ट करता है? नहीं, बट आई थिंक वो प्राइमरी वो सेकेंडरी दोनों के साथ कर जाएगा. We'll talk about that test in a bit. But basically, what is this? Methylamine is a primary amine. This is a secondary amine. मतलब कि something that removes both of these hydrogens. Yeah, that will be the differentiator. So there are two tests that I can think of. One is this. What is this? Oh, Hoffman bromide. This is interesting. What will this give you? Can you use Hoffman bromide or can you only use this? दोनों यूज कर सकते हो, सिर्फ एक यूज कर सकते हो. आपको क्या लगता है? कार्बोलामीन हिंसबर्ग टेस्ट. हिंसबर्ग दूसरा है. विल टॉक अबाउट व्हाई हिंसबर्ग मे नॉट बी एप्लीकेबल हियर. वो सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में. यस, कार्बोलामीन ये दूसरा वाला कार्बोलामीन टेस्ट है. बिल्कुल सही आपने बोला. इसमें बन जाता है कार्बीन. बट कैन यू ऑल्सो यूज हॉफमैन ब्रोमाइड? गिन्सबर्ग दोनों साथ करेगा. एग्जैक्टली. हाँ पीयूष, वाई? बिकॉज
उसको तो सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए, दोनों में एक हाइड्रोजन है। विल टॉक अबाउट गिन्सबर्ग वेरी सून। कार्बालमीन तो सही है, बट कैन आई यूज दिस, कैन आई डू Br2KOH, कैन आई डू दिस? हॉफमैन ब्रोमाइड कर सकते हैं क्या? तो सोच के बताइए, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डू? हॉफमैन ब्रोमाइड में RCH2NH2 से बन जाता है, क्या बनता है? ओ नहीं, हॉफमैन ब्रोमाइड तो नहीं कर सकते, उसमें तो अमाइड होना चाहिए पहली बात। हॉफमैन ब्रोमाइड तो नहीं कर सकते, उसमें तो अमाइड चाहिए ना। खैर, एनीवे, या नॉट दिस फॉर श्योर। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सेफ, मेरी क्लास तो अभी के लिए यूट्यूब पे फ्री है। The one that I told you is a paid course, hence there was a cost and a code and all of that, right? Benzene sulfonyl chloride, okay, very nice. Step down reaction used, nice, I use those terms, nice terms. Nigam, bilkul sahi. All right, Aditya, yeah, you can't use this, so that's why nice cross over here. But you can use a carbalamine test, which is also the isocyanide test. किसी ने ऊपर isocyanide भी बोला था, isocyanide बन तो रहा है। isocyanide क्यों बनता है? क्योंकि beautiful things happen. यहाँ पे CCl2 बनता है, ओके। मिथाइल अमीन कहाँ गया? अरे ये तो NH2 होना चाहिए। N के पास है इलेक्ट्रॉन्स, या दे कंबाइन एंड दे फॉर्म NC। गुड जॉब। एंड इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सही है। अगला सवाल देखते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के बीच में कैसे करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट? या भव्या, इफ यू यूज हिंसबर्ग, डू यू मीन हिंसबर्ग? व्हाट इज हाइसेनबर्ग? मैं समझा नहीं भव्या, डू यू मीन हिंसबर्ग टेस्ट? If it's Heisenberg is another reagent I don't know about. Heisenberg is a guy who did what, physics, right? Hinsberg test में दोनों काम कर जाएगा, so you can't differentiate between them, I feel. Really, Nigam? That's crazy, man. That was really fast of you. Very cool, bro. Very cool. I'll see you there on the April 18th वाला time frame. काफी टाइम बचा है, but yeah, that's what, a month away, but that's awesome that you guys already got it. Hinsberg and nitric acid, we'll talk about that. Secondary and tertiary के बीच हम लोग Hinsberg यूज कर सकते हैं. What is this? Yeah, कुछ बोल रहा था बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। आई डोंट थिंक इट्स बेंजीन, इट्स फिनाइल, राइट? ओके, सेम थिंग, बेंजीन फिनाइल, ठीक है। या SO2Cl, एंड इन दोनों में से HCl निकल जाता है, तो एक हाइड्रोजन चाहिए, राइट? सो टर्शरी अमीन्स विल नॉट रिएक्ट विद दिस guy will react with it. So this is insoluble in alkalis. This is Hinsberg test, not Heisenberg, my friends. It's Hinsberg. Okay, be careful about this. Yes, Hinsberg. Look at that, all of you. Sunshine, Nigam, super duper Rajanya, Nigam. फिर से Komal, welcome. Teetraj, Pampas, Snigdha. Hey, Snigdha got their own account. Devanshi are all saying, giving me the right answer. Awesome. Let's go to the next one. Let's go to the अगले वाले सवाल. इथाइलअमीन और एनिलीन, इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो, हम लोग सारे टेस्ट जो है एक शॉट में डिस्कस कर रहे हैं, but I will never call it a one shot video because one shot video is useless. This one, however, is very useful because हम लोग NCERT के सवाल कर रहे हैं। इथाइलअमीन और एनिलीन को कैसे करोगे? इन दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों प्राइमरी अमीन्स हैं, बट फर्क ये है कि एक अराइल अमीन है, ये एल्काइल अमीन है। दैट्स अ हिंट, दैट्स अ बिग हिंट। अराइल और एल्काइल, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो अराइल अमीन के साथ होगा बट एल्काइल अमीन के साथ नहीं होगा? Heisenberg's uncertainty principle, yeah. All right, if you're wondering, I keep loading the other side, I've changed the setup a little bit. Instead of here, now my laptop is there. That's the one, that's what's powering this awesome session. Heisenberg चाचा फिजिक्स में है, वो पोजीशन वेलोसिटी में रिलेशन बताने वाले, बिल्कुल सही। HNO2 के साथ इथाइल अल्कोहल देगा, ओके, इथाइल अल्कोहल देगा, ओके। अजोडाई टेस्ट, तनु, आई लाइक व्हाट शी इज कॉलिंग इट, ओके। अजोडाई टेस्ट इज an interesting way of doing it. Heisenberg test only works. Breaking Bad, my bad. All right. ठीक है. Azodai says Deepanvita, after a long time, welcome. Coupling reaction, says Pampa. All right, all of you on the right track. So what do? I furnish in situ HNO2, and what that does, it gives me an NO plus, nitrosyl guy, and then that forms this, right? You know this, a coupling reaction, etc., etc. This forms this. And onward, oops, sorry, ये शायद मैंने थोड़ा कवर कर दिया. Let me fix this, just one moment please. 22 slide number 22, ये आपको दिख नहीं रहा क्लियरली, ऑल्दो आपको जो आराम से उसमें तो दिख जाएगा, नोट्स में I'll give you on Telegram, you'll see this easily, but yeah, बिल्कुल सही. Yeah, HONO plus HCl. Okay, cool. So you got to change the pH up a little bit. Okay, when you have N2Cl, you got to make that, क्या बोलते हैं इसको, in a basic medium. And what is this? Is this naphthenol? What is this? ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? Did I name that correctly? Naphthalene is two benzene. So naphthenol maybe? Is that the correct name for it? What do you think? आपको क्या लगता है? Coupling reaction, coupling reaction. Okay.
naphthol, not naphthanol, naphthol. Okay, orange dye, बहुत इंटेंस कलर के डाइज बनते हैं, एजो डाई रिएक्शन एज सम ऑफ यू, एजो कपलिंग, बिल्कुल सही, लवली. नेक्स्ट वन, यू आर ऑसम एट दिस. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज, हाँ अब हुई चीजें इंटरेस्टिंग. कैन यू अरेंज दीज फोर इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि सबसे ज्यादा वाला पहले, सबसे ज्यादा पीकेबी, एंड देन नेक्स्ट, नो होल्ड ऑन, क्या इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग वैल्यू. तो दिस इज ग्रेटर, हाँ तो दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले, which means what we need to put here is the strongest base, weakest base, pkb. pkb, अगर kb वैल्यू हुई हाई तो pkb वैल्यू होगी लो. दैट्स ऑल द हिंट यू नीड. ठीक है, ठीक है. तो this means this is the weakest base first and then the strongest in the end. That's the order you need to go to. All right, let me look at the question now. Easy. All right, naphthol used in Molish test. Use, भाई साहब क्या बड़ी बड़ी बातें. Molish test, naphthalene, naphthol. Okay, 4213, pkb is minus log kb. बढ़िया, super duper. Piyush test 4213. Okay, so 4 2 1 1 3. So 4 2 1 3. All right. Can you tell me why is 4 the weakest? Can we discuss that? Why is 4 the weakest? Okay, everybody is saying 4213, weakest base. Nigam, Saif, super duper, Pampa, everybody, not even a single person giving me something else. मतलब कुछ तो special होगा 4 में. What is so special in 4 that makes it the weakest base? What is a base? A base is something that easily furnishes H plus A, H plus तो है ही नहीं इसमें, which easily gives away electrons. Remember, every organic reaction is an acid base reaction. यहाँ पे Lewis base है, right? Lewis base मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए, या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज जिसपे लोन पेयर है जो देना चाहता है. ओके, देने चाह रहा है. सो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस. स्लाइड इज ब्लरी. आई, स्लाइड ब्लरी तो नहीं लग रही है मुझे. वी आर एट 4500 kbps. मुझे लगता है आपको अपना क्या बोलते हैं सेटिंग्स चेक करनी पड़ेगी. माय सेटिंग्स सीम टू बी ओके. We are using 0.1% of the CPU, so everything is good. Okay, so I've drawn the lone pair on all of them. Now, ये lone pair available नहीं है. Not available really. I mean, it's kind of available, but not really. Okay. Yeah. So this is going to be the weakest base. Okay, what next? इसमें भी resonance है, but it also has a plus I effect due to CH3. Now look at this. This has a plus I due to C2H5. इसमें दो हैं. This is the strongest base. This one's going to be the strongest by far. क्योंकि इसमें है दो C2H5 सेकेंडरी अमीन है ये, तो सबसे ज्यादा होगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ओके, बट दैट्स द बेसिसिटी. जो पी के बी वैल्यूज उल्टी होंगी. एंड यू आर राइट. 4 2 1 एंड देन 3. ओके, कूल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड जॉब एवरीबॉडी. व्हाट्स अप बैग साहब? ऑल गुड? ओके. Electron delocalization. Perfect. All right. Difficult to donate. Yeah, absolutely right. Singh Devanshi. बिल्कुल सही. Now, अच्छा, दो और सेम चीज. इस बार सिंपल है. Increasing basic strength. तीन डिफरेंट, दो डिफरेंट सेट्स हैं. एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा टोल्यूडीन. टोल्यूडीन क्या वाला होती है? एक तरफ CH3, दूसरी तरफ NH2. पैरा मतलब ऑपोजिट साइड्स. नाइट्रो एनिलीन, एक तरफ नाइट्रो, दूसरी तरफ NH2. ओके, एनिलीन इज जस्ट NH2. और ये सब क्या है? अच्छा, दिस वंस वेरी कूल. हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज amine, aniline, a primary amine. This is a secondary amine, and this is a benzyl amine, which makes it even more interesting. Pretty cool. Pretty cool. B वाला देखते हैं पहले. नहीं, चलो पहले वाले देख लेते हैं. Let's see. A is 213. अच्छा, 213 Ripanvita and Deethraj. Devanshi says 312. 213. Paratoluidine. अरे, basic strength is proportional to minus I effect. Okay. Minus I effect. Don't you mean plus I effect? Minus I नहीं, plus I effect ना. What is minus I plus I? मुझे कभी याद नहीं रहता है. माइनस आई का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? सुपर डुपर. माइनस आई का क्या मतलब होता है? माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, खींच रहा है, उसको माइनस आई बोलते हैं, राइट? सब लोग बोल रहे हैं 213.
ओके, बट कुछ लोग अभी बदल के बोल रहे हैं 312. पीयूष इज सेइंग 321. अरे मेक अप योर माइंड माय डियर फ्रेंड्स, एवरीवन इज सेइंग 213. ओके चलो एक बार फिर से डायग्राम बना देते हैं, इसका लगता है डायग्राम की जरूरत है. ये देखो, ये भाई साहब क्या करेंगे, दिस विल पुल इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल पुश इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाकी क्या, बाकी कहां पे, yeah, so what do you think? Is it withdrawing? Yeah, exactly, Deepanvita. Minus I means withdrawing. Withdrawing. Okay. नाइट्रोजन काफी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है. CH3 लाइक नहीं भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन देता है. अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है, इट्स इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग एंड हेंस इन अ वे काइंड ऑफ आल्सो इंक्रीजिंग बेसिसिटी. तो मेरे हिसाब से 3 2 1, नो होल्ड ऑन, 3 1 2, मेरे हिसाब से. आपको क्या लगता है? Yeah, Nigam says 312 as well. Pampa still thinks it's 213. Okay, can we pause for a second? Because everybody said 213 very confidently. 3 को सबने एंड में डाल दिया. मेरे हिसाब से 3 तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए. आपको क्या लगता है? एक बार सोचो, थोड़ा आराम से सोचो. ओके, बी वाला देखते हैं तीर्थराज. 2 मिनट. पंपा थैंक्स फॉर द सेकंड वन, विल लुक एट द सेकंड वन. एक सेकंड में देखते हैं. पहले हम लोग पहला वाला क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत लोगों ने 213 बोला था. तो पंपा, स्निग्धा, सैफ, देवांशी, do you guys want to see this for A? Why not 213? अभी तो मैंने बताया, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी लेस अवेलेबल, राइट? दिस इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इंक्रीजिंग डेंसिटी, दिस इज डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नॉट 2. या मतलब 3 कैनॉट बी द लास्ट. व्हाट इज योर लॉजिक फॉर 213? मुझे उल्टा ये बताओ ना. माइनस आई इलेक्ट्रॉन खाओ ग्रुप, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप. ये प्लस माइनस आई भूल जाओ यार. ठीक है, आई नो पीपल वांट टू मग इट, बट क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यू नीड टू नो अगर रिंग एक्टिवेट हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है. अब रिंग एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे होगा? एक तो रेजोनेंस वाला चीज होगा, दूसरा आइडिया होगा आई, राइट? 312 बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट. ठीक है देवांशी, ग्रेट. एवरीबडी एल्स हु सेड 213, कैन वी agree that this is the right order? Yeah, Teethraj, do you see why 3 is the highest? I've drawn these arrows. It's increasing the density of electrons. Okay. Oh, increasing order of. All right, I'll read the question. Cool. माफ करना, ठीक है, उल्टा लिख देंगे. ठीक है. In that case, it is 213. बिल्कुल सही. Yeah, this one's on me. My bad. I was wondering how come everybody got messed up. I messed up. My bad. My bad. Thank you. दीपान्विता ने बिल्कुल सही सही बोला. दीपान्विता, थैंक यू फॉर टेलिंग मी इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड 213 बिल्कुल सही है. ठीक है, कूल. इस वाले क्या होगा? 1 2 3, मतलब कि ये सबसे कम है, फिर ये, फिर ये. ठीक है, कूल, एब्सोल्युटली राइट. व्हाई इज इट 1 2 3? बिकॉज इसमें तो लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है. इसमें लोन पेयर दोनों में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और डीलोकलाइज्ड है, राइट, इन 1 and 2. एंड इन दिस यू गॉट द होल प्लस आई इफेक्ट ऑन इट. सो एब्सोल्युटली राइट. माय बैड, माय बैड. थैंक यू, आप लोग बिल्कुल सही थे. मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ठीक से, वो मैंने खुद ही सवाल नहीं पढ़ा. ठीक है, नेक्स्ट वाला. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज. आई, गैस फेज. गैस फेज और पानी में क्या फर्क है? देखो, पानी में चीजें सॉल्वेट हो सकती हैं, यहाँ पे गैस फेज में सॉल्वेट नहीं होगी. ठीक है, सॉल्वेशन का क्या फर्क पड़ता है? सॉल्वेशन में क्या होता है ना कि आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ रोल. व्हाट अबाउट गैस फेज? गैस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले अ रोल. व्हाट गैस फेज में क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस फेज एंड लिक्विड फेज? सोचना उसके बारे में, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं. इवन विदाउट ऑल ऑफ दैट इंटरनल डिबेट, यू कैन स्टिल आंसर द क्वेश्चन विदाउट एनीथिंग. बहुत सिंपल आइडिया यहाँ पे लग रहा है, सेम एज बिफोर. 213 ही है. हाँ सिंह, बिल्कुल सही, 213 है, बिल्कुल सही. सब लोग सही बोल रहे थे, 213 सही था. ये चैप्टर अराउंड 10 बार रिवाइज कर चुका हूं बोर्ड्स करके डर से. गुड, सुपर डुपर गुड. इसका क्या होगा? 3214 सबसे ज्यादा ये वाला होगा. क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके पास है 3 C2H5. ग्रेट. एंड देन दिस इज अ टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, और ये भाई साहब तो खुद हैं अकेले अमोनिया. ऑल गुड. गुड जॉब एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर राउंड. अकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. बेंजोइक एसिड टू एनिलीन. रैपिड फायर राउंड खत्म, अब थोड़ा जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा. इसको कैसे कन्वर्ट करें हम लोग? ये कन्वर्जन्स बेंजोइक एसिड टू एनिलीन कैसे किया जाए? बिल्कुल सही, 3214, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वी हैव मूव्ड ऑन. पीयूष, निगम, तीर्थराज, देवांशी, राजन्या, दीपान्विता, पंपा एंड स्निग्धा, एब्सोल्युटली राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इजी. चलो बेंजोइक एसिड एनिलीन बनाओ. What am I doing essentially? I'm converting acid to NH2.
सो आई एम रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कार्बन. स्टेप डाउन रिएक्शन क्या बोला था पीयूष ने? ऊपर कुछ बोला था. लेट मी स्क्रॉल अप. व्हाट डिड पीयूष से? पीयूष 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 पीयूष. I have to scroll up quite a lot. You guys have been chatting. Hinsberg, Hoffman. He said something cool. We call it a step down reaction. I like that word. मेरे टीचर भी यही बोला करते थे. अभी मिल नहीं रहा है क्या बोला भाई साहब. बट या बेसिकली यू रिड्यूसिंग अ कार्बन हियर. सब लोग बहुत शांत हो गए. क्या हुआ? Why you waiting for me to solve it? आपको मुझे हेल्प करना है. सोडा लाइम देन नाइट्रेशन देन रिडक्शन. सोडा लाइम से क्या होगा? सोडा लाइम. हॉफमैन ब्रोमिनेशन. स्टेप डाउन रिएक्शन मींस डिक्रीजिंग कार्बन. बिल्कुल सही तीसरा. स्टेप डाउन मतलब एक कार्बन को हटाना. एक कार्बन को हटाना पड़ेगा. मतलब ये लास्ट स्टेप होगा हॉफमैन ब्रोमाइड. अगर लेट्स वी कैन वर्क बैकवर्ड्स. नो, इट्स ब्यूटीफुल. हॉफमैन ब्रोमाइड यहां पे होगा. अगर ये लास्ट वाला स्टेप हॉफमैन ब्रोमाइड हुआ तो मतलब मुझे पहले यहां पे कहीं पे उसमें पहले अमाइड तो बनाना पड़ेगा. एड अमोनिया है ना. लाइम सोडा लाइम. somehow I have to make this and then Hoffman bromide. अब ये कैसे बनाया जाए? Can I just add ammonia? I don't think I can just add ammonia. I have to do like थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे. First, we will make it a haloarine, right? We'll make it a haloarine. We'll add SOCl2, and then we'll add ammonia. That will give me this reaction. Directly ammonia डालो तो NH2 नहीं बनने वाला है. All right. Soda lime CO2 हटा देगा, but if you do that, उसके बाद how will you get to NH2? नाइट्रेशन. अच्छा ठीक है, वो भी कर सकते हैं. यू आर सेइंग कि सोडा लाइम डालोगे तो ये CO2 हट जाएगा. एंड देन यू आर सेइंग यू ऐड N2Cl अजो. देन हाउ आर यू गोइंग टू गेट? देन यू हैव टू गेट एनालिन बॉस. सो हाउ आर यू गोइंग टू गेट नाइट्रेशन? अच्छा, यू आर सेइंग कि HNO2 एंड H2SO4, वो वाला क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 होगा ना, नॉट HNO2. HNO3 इससे जो NO2 ऐड हो जाएगा. एंड देन यू नाइट्रो बनाओगे आप लोग, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, राइट? एंड देन उसके बाद यू रिड्यूस इट टू NH2. ठीक है यार, बहुत हार्श कंडीशन है, कर सकते हो ये भी. बट सिंस हम लोग जो अमीन्स चैप्टर में है तो हम लोग नाइट्रो के बजाय ये वाला करेंगे. ठीक है, वील डू इट दिस वे. यू कैन डू दैट एज वेल. श्योर. ऑलराइट. हरे कृष्ण. सनातन, हाउ यू डूइंग? Are you going to give me the answer to the next one? तीर्थराज, अगर हम C6H5CH को NO2 में कन्वर्ट कर, एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तीर्थराज, वही तो पीयूष बोल रहे थे. श्योर ब्रो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? गो अहेड, डू इट. गो अहेड. बट सिंस हम लोग अमीन वाले चैप्टर में वी शुड गो दिस रूट एंड डू दैट एज वेल. ठीक है, कूल. नेक्स्ट वन. गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. सनातन दोस्त, प्लीज आंसर भी बताइए. भगवान नाम लेना बहुत अच्छी बात है, बट आंसर बताइए. Add NH3 and then a Huffman bromide. Sure. Either way works. What Piyush said works. What we did also works. Diazotization reaction. Oh, here right now this one. Give the structure of A, B, C in the following reactions. क्या बन रहा है? ये तो simple है. ये you're starting with a haloalkane. So you must get a cyanide here. C2H5Cn. Reduction से क्या होगा? This is another way. So हमने देखा वहां पे कार्बन घटाने का तरीका. जहां पे cyanide ऐड किया ना, usually the way to increase the number of carbon atoms in that compound. यहां पे हम लोग कार्बन एटम कैसे करेंगे? पहले CN ऐड किया, फिर उसको रिड्यूस करेंगे ताकि बन जाए CH3. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. सो व्हाट इज दिस? इज इट गोइंग टू बिकम CH3 और डज इट गोइंग टू बिकम अमीन? LiLH4 से क्या होगा? इतना भी नहीं करेगा. सो कहां से? नाइट्रोजन थोड़ी हटाने वाला है. इट जस्ट एड्स हाइड्रोजन. ओके, वो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन की जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें बस हाइड्रोजन डाल देगा वो, व्हिच मींस दिस विल गेट रिड्यूस्ड टू एन अमीन. और अमीन के बाद ये HNO2 0 डिग्री सेल्सियस से फिर से बनेगा तुम्हारा डायजो वाला कंपाउंड. और अगर पानी है तो वापस बन जाएगा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. भव्या गुप्ता, वाह वाह वाह, लुक एट दैट, सीधे लास्ट वाला. थैंक यू सनातन. पॉल, गुड जॉब. व्हाट अबाउट द फॉलोइंग वंस? डू यू अग्री विद पॉल? डू यू अग्री विद भव्या? साइनोईथेन. ऑलराइट. एक कार्बन एक्स्ट्रा नहीं आ गया? सनशाइन नहीं, बिल्कुल सही. सनशाइन ने बिल्कुल सही बोला. अमीनोप्रोपेन. Can we call it that? Aminopropane? Yeah. Last step is going to be propyl alcohol, Bhavya, not ethyl alcohol. Bhavya, ध्यान से देखो, यहां पे 2 कार्बन थे, फिर बन गए 3 कार्बन. ओके, एंड देन यू गेट, वेल, जस्ट अगेन वी कंटिन्यू 3 कार्बन, लास्ट में भी 3 कार्बन होंगे. भव्या, गुड ट्राई, बट बी केयरफुल. नॉट इथाइल, लास्ट वाला होगा प्रोपाइल अल्कोहल. या देवांशी, या वी हैव एडेड अनदर कार्बन. अगर KCN की जगह AgCN होता तो देन यू वुड गेट NC, यू वुड गेट आइसोसाइनाइड. पढ़ा है हेलो एल्केन चैप्टर, सुपर डुपर. यू कांट डू AgCN. Can you add AgCN?
व्हाट हैपेंस इफ यू ऐड AgCN? Ag और C के भी इतने कोवेलेंट नेचर है, ये सब पढ़ चुके हो ना, NC बन जाएगा. That's not going to work very nicely at all. All right, propyl alcohol, not ethyl alcohol. ध्यान से करो. Next question. Same चीज A, B, C निकालना है. FeCl, Fe और HCl. What is this? This I feel is something reducing nature होगा इसका. Reducing. फिर से हमारा डायजो वाला बंदा आ गया. फिर we will add. Oh, ये तो डाई बन रहा है मुझे लग रहा है. This is looks like the final thing is going to be an azo dye. What do you think? Try करके देखो. Got it? All right. Good, good, good. It's a good question. AgCN डालो क्या होगा? हमने ये कवर किया है haloalkanes. Yeah. When you add AgNO2 and KNO2, उल्टा हो जाएगा. AgCN और KCN में उल्टा है. ठीक है. Revise that haloalkanol chapter. Description में पूरा है. All the videos I've ever made. Isocyanate, yeah, actually. Oh, first part board में आया था. Good job, Rajana. Okay. Good memory. Good memory. A is C6H5NH2. हाँ, reduce हो जाता है. ये reducing agent है. Reduce होकर क्या बनेगा? अमीन बनेगा. Aniline बनेगा. Aniline के बाद in situ HN ये NO plus बनता है, etc. etc. N2 plus बनता है. And then this already has an OH. So when this has a plus, this is pretty activated and it has a lot of electrons. This guy does not have electrons. That's what's going to happen. And this is going to be ortho-para directing. And ortho तो नहीं होगा यार, बहुत बल्कि है, तो it's going to be para. ठीक है? Para hydroxy azo benzene. That's your final compound. A is aniline, absolutely, absolutely. A is aniline. B is benzene diazonium chloride, and C is para hydroxy azo benzene. Orange dye, says Piyush. सब ऑरेंज है क्या? वो वाला भी ऑरेंज था, नैफ्थॉल भी ऑरेंज था, ये भी ऑरेंज है, ये ब्लू नहीं है. पता नहीं क्या कलर है. क्या कलर होता है इसका? हाइड्रोक्सी बेंजीन का कलर क्या होता है? हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन. हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन कलर, मुझे लगा था ब्लू था, नॉट श्योर. ओ, ये भी ऑरेंज है, बढ़िया. दिस ऑरेंज. व्हाट इज दैट? नैफ्थॉल वाली थिंग. बेंजीन नैफ्थॉल कलर, वो भी ऑरेंज था. कितने ऑरेंज चीज है? नैफ्थॉल एनिलीन डाई, कलर क्या है इसका ये तो बताओ. प्रिपरेशन बता रहे हो, 1000 चीज बता रहे हो, ये भी ऑरेंज है. मोर ऑरेंजी. There used to be a cartoon that's red. Okay, all right, if you say so. There used to be a thing that says more orangey. Was that a slice ad or something? Anyway, nice. Slice to mango है. Complete this reaction. What is this? इससे बनता है कार्बीन. Carbene CCl2. What is this? By the way, is this electrophilic or nucleophilic? Is this electrophilic or nucleophilic? Carbene से पूछा नहीं है implicitly. I was just talking to somebody and they gave me an interesting answer. Naphthol is orange. 2 dyes ही दिया है, ठीक है. C6H5NC. Nice C, Raj. बिल्कुल सही. How does NC form? Isocyanate PHNC. Lovely, lovely, lovely. ये एक बात है ना, ये कार्बीन क्या होता है? Is this electrophilic or nucleophilic? Give me a hand with that. Absolutely. जो आप लोग आंसर बता रहे हो बिल्कुल सही है. बट ये थोड़ा बताओ. इलेक्ट्रोफाइल है पीयूष? इलेक्ट्रोफाइल है. अच्छा, क्यों इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? सुपर डुपर सब लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल. अच्छा, कार्बिलमीन बिल्कुल सही बोला, बट इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है. थोड़ा सोचो यार. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया. देखो, बार बार मैंने बोला है. नहीं, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इट लाइक्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियोफाइल्स. Oh, all of you are right. ठीक है, चलो. No, there's no way to confuse you guys. Huh? It wants more electrons because it's incomplete octet. बिल्कुल सही है. Incomplete octet, right? मतलब incomplete octet नहीं है. इसमें कितने बॉन्ड है? कार्बन के हैं 2 बॉन्ड. So it's got 4 electrons plus 6. So it's a 6 electron species and it really wants electrons. Hence it's electrophile. इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा. Hence it forms an isocyanate. बिल्कुल सही. Yeah, awesome. Electron deficient. Perfect. बढ़िया. दोनों है सुपर डुपर से. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. ओके, कूल. इट्स अ वीक. I mean, let's in at our the things that we have studied so far, especially with amines, it is definitely going to behave as a Lewis acid. Okay, because amine is going to behave as a Lewis base in this case. If you see every organic reaction as an acid-base reaction, life will be easy. Next one, इसको complete करो. You've got an benzene azo chloride with H3PO2 and then water. क्या होता है? क्या होगा? It means बिल्कुल सही पॉल.
बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर योर आंसर। C6H6 बेंजीन बन जाता है भाई, बेंजीन बन गया, अच्छा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? हाँ बिल्कुल सही, H3PO2 इज a reducing agent। यार रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होता होगा, ये कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है? H3PO3 becomes H3H2PO, H3PO2 becomes H3PO3, ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? इधर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? P प्लस 2 into -2, राइट? 2 into -2 is equal to 3। Okay, -3 specifically, right? Because it looks like, nahi, this is not going to be working out very well. Let's not do it that way. 2 into -2 plus 3 is equal to 0. So P must be plus 1. Okay. इस केस में क्या होगा? P plus 2 into -3 plus 3 is equal to 0. So P इधर से क्या है? 6 minus 3 plus 3. Oh yes. ये हो रहा है ऑक्सीडाइज और ये भाई साहब हो रहा है रिड्यूस। ओके, गुड, साउंड्स गुड। शिफ्ट H2O होता तो सिर्फ, अच्छा सिर्फ H2O होता फिनॉल बनता, बिल्कुल सही, फिनॉल बनता। ओके, ऑलराइट। हरि प्रसाद सेनापति, इट्स वेरी नाइस नेम सेनापति जी। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वाटर या एसिड में फिनॉल बनेगा, स्निग्धा सेज वाटर या एसिड में फिनॉल बनेगा। लेट्स सी, देयर इज अनदर क्वेश्चन कमिंग अप। एक मिनट रुक जाओ दिवांशी, लेट्स सी, लेट्स सी। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इफ आई यूज LiAlH4 इंस्टेड ऑफ दिस? अगर मैं LiAlH4 यूज करूं तो क्या होगा? H3PO3, यस H3PO3 बनता है, बिल्कुल सही देवांशी, देवांशी बिल्कुल सही। If I use LiLH4 here, what will happen? Will something happen? Reaction होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा? Can you guys think about this one? Can you think about this one, please? Okay, NH2. Why? Why NH2? Why NH2? And by the way, इसमें पानी है तो, right? Water is there. It's not forming OH. I didn't understand your question, Devanshi. It forms पानी में ही HCl बनता है। फिनॉल बनेगा? फिनॉल क्यों बनेगा? What do you think? थोड़ा मुझे इनपुट्स दीजिए भाई। What's the problem with LiAlH4? It can't really reduce it. It's not. It's good to reduce alkanes. Okay. It does not work with benzene. Warm water पे phenol बनेगा. Okay, भाभ्या. Cool. All right. So it can form an amine maybe, but it's not going to displace this. It'll reduce this guy itself. Okay. It's going to reduce this, but it's not going to go ahead and, yeah. It does not. Yeah. Cool. All right. It's not going to give benzene expel nitrogen. That's not going to happen. No, it's not going to give benzene. LiLH4 नहीं देता है. Yeah, that's just, LiLH4 does not do this. Okay. If you want to know the mechanism, it's a little complicated. Hold on, let me see if I can give you the mechanism. Mechanism थोड़ा complicated लग रहा है, छोड़ो, डिजिटल mechanism। वैसे महंगा है या LiLH4? महंगा तो है, अरे वाह, ये सभी मालूम है, that's great। No reaction, sure, sure। C6H5N2Cl plus ethanol, उसमें क्या होगा? What happens when I add ethanol to this? Well, if you use the concept of redox reactions again, right? क्या बनेगा? No trick at all. This is very straightforward. This is very straightforward. There's no trick. Oh, sorry, there's a bit of a trick. I mean, NCERT के हिसाब से there's no trick, but असलियत में NCERT जो बोल रहा है वो थोड़ा गलत है। तो NCERT के हिसाब से आप लोग बोलो क्या होगा यहाँ पे इस वाले में? C6H5N2Cl plus C2H5OH। मतलब मैं अल्कोहल और C6H5N2Cl के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। फिनॉल, फिनॉल बनेगा। क्यों फिनॉल क्यों बनेगा सिग्धा? What's the logic behind phenol? Can you help me out with that? I'm looking for the source of the reaction. 88, 3% yield. Repository, Arizona. Whoa.
ये कहाँ गए भाई साहब? ओके, here we are. Here we are. Okay, cool. Okay, बेंजीन फिनॉल. कुछ लोग बोल रहे हैं बेंजीन, कुछ लोग बोल रहे हैं फिनॉल. ओके, लेट्स सी क्या होता है. लेट अस सी क्या होता है. ओके, कूल. वेल, एनसीईआरटी के हिसाब से बेंजीन बनेगा, इथेनॉल बनेगा. बट हियर्स द प्रॉब्लम. ये 1901 तक दिस इज ओके, बट अराउंड 1930s, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, 1930s में ये पता चला कि दिस जस्ट 3% yield. So I'm just trying to open that site up. It's not opening. What, bro? क्यों नहीं खुल रहा है ये? So this is not very good. Okay, this is not a good way to get benzene because it has a 3% yield. I'm not making this up. I'm waiting for the site to load up. It's a Arizona.edu का paper, but oh my God, is it taking some time to download or whatever? One line was given that with water or dilute acids, phenol will form. Please confirm. Can you give me the source of that line, or let me also open up amines का chapter मैं भी खोल के देखता हूँ कहाँ पे लिखा है ये. amines. ये दोनों जगह बैठ के खुल ही रहा है पेपर. खैर, पेपर तुम लोग देख लेना, इसमें ये है, but it's only 3% yield. Okay, so please be careful about this. Write it to get marks, but don't, if you're actually ever going to do this in a lab, probably not, and it's not going to happen. Phenol. I'm looking for the word phenol. Wow, phenol के साथ बहुत reaction है. Phenol. Oh, अच्छा, Snigdha, I get what you're saying. Snigdha is talking about phenol being formed. That is if you have only water, not H3PO2. उसमें सिर्फ पानी अगर हो, yeah. If you have aryl N2Cl, that was going to come up later on. अभी मेरा पेज दिख रहा है क्या? मेरा what do you call it? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. Let me enable the screen. I thought अभी तक आपको स्क्रीन मेरी दिख रही थी. खैर, this is the amines का NCERT, right? So Snigdha is saying एक लाइन दी थी NCERT में, अच्छी लाइन, it's a nice line. This line right here, right? Replacement by hydroxyl group. So about 283 Kelvin, मतलब room temperature के आसपास ही. If you have aryl N2Cl and just water, it gives you phenol. That's what you're talking about, right? Phenol preps, maybe. Snigdha is there here as well. See, मेरे सर के just ऊपर. Cool. But for some reason, this guy, oh, it opened up. Look at this. Benzene diazonium chloride with ethanol. 1931 का पेपर है. ठीक है यार, मैं I'm not doing this just to show off or something. ठीक है, the paper is from 1931, it says 1957, etc. But here's the point, this yield is 3%. Look, देखो 3% of the product benzene, मतलब बेंजीन नहीं बनता है. एंड कंक्लूजन में भी यही लिखा है कि भाई 3% बनता है. ठीक है, this reaction of aldehyde is 3% yield at 25 degrees Celsius. ठीक है, acetaldehyde भी इससे ज्यादा नहीं बनता है. Cool. I want to show this to you so that you know कि आप लोग marks, to get marks you write whatever you need, but be cognizant of the fact कि this is not entirely correct scientifically. This is a better thing. So what actually happens is you get an ether. I want to say this type of ether is called a phenotol, which is just a fancy of saying कि भाई एक aryl molecule है, O है और CH2R है. ठीक है, that is what happens over here. With this you get RCH2O added to this. That's all. N2Cl चला जाता है and this gets added. R gets added, sorry, not RCH2O, just R gets added. CH2O goes away. ठीक है, या इसका सोर्स भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया. You see this link, right? यहाँ पे ऊपर मेरे सर के ऊपर 3% yield, high yield of ether, ये दोनों है, अगर देखना है देख लेना. When I was doing this, I was like, give me the reaction mechanism. So that's how I learn organic, right? I can't mug reactions. अगर reaction mechanism बहुत complicated, I will not tell you, but I need to be convinced कि सही है. So when I was doing that, ये तो गड़बड़ लग रहा है. That's when I found out. Next one, aniline with bromine. क्या होता है? क्या होता है एल्नीन ब्रोमीन के साथ? पानी, ब्रोमीन, हॉफमैन ब्रोमाइड? नो, देयर इज नो NaOH. एंड अगर होता भी तो क्या कर लेता? दिस इज नॉट एन अमाइड. ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एन अमाइड एंड एन अमीन. सो कभी भी अमाइड के रिएक्शन के अमीन मत लिख देना. ठीक है, एनीवे, ब्रोमीन डालो क्या हो जाता है? नीट में तो हाँ, निगम नीट में बेंजीन ही देना. Why do you want to take लफड़ा with NTA? उन लोगों ने जेई में भी कुछ गड़बड़ चीजें, गलत चीजें बोल दी थी. लाइक जो FeNO जो कॉम्प्लेक्स है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयन का पूछा था. उसका एक्चुअल आंसर इज नॉट +1, इट इज +3.
बट उन लोगों ने +1 डाल दिया है। मैंने पेपर भी दिया था, बट चैलेंज करके भी एनटीए डिडंट डू एनीथिंग। बट ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा है लिखो, मार्क्स लाओ, बट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ओके, व्हाइट पीपीटी, ट्राई ब्रोमिन, पीयूष, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो, बिल्कुल सही। सनशाइन, ओके, all right, yes, cool, easy one. Let's go to the next one. Complete this reaction. C6H5N2Cl with HBF4, ये क्या बला है, with NaNO2 and Cu. What does HBF4 do now suddenly? What do you think HBF4 does? हाँ। Thank you everybody. Yes, निगम, राजन्या, सनशाइन, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। अरे हटा क्यों था, बिल्कुल सही बोला आपने। अगला वाला क्या होगा? What does HBF4 do anyway? Nitrobenzene, निगम, look at that confidence, I like it. नहीं भाव्या, it's +3, उसका भी मैं I'll send you a paper, उसका भी, रुको। बट इट्स ओके, तुम्हारे लिए आए तो तुम लोग +1 ही लिखना, डोंट वरी अबाउट इट। नाइट्रोबेंजीन, ओ, Paul's Schumann reaction, Piyush, bro, why do you know the name of that reaction? But good job, yes. Paul's Schumann reaction, you got a spelling right too. That's like a lot of respect to that. Schumann, like Shriman, but Schumann. Yeah, nitrobenzene. All right, next one. What are reducing sugars? We have now moved into the realm of biomolecules very subtly. We have slid into biomolecules territory. Fe, kahan gaya wo? We chatted about this on the, I have a JE Telegram channel. We chatted about it there. ये सब जो मैंने आपको बोला था नाइट्रोसिल कंपाउंड वाला। Anyway, इसका आप लोग प्लीज आंसर बताइए। Why is it? ये तो बहुत सिंपल है ना। Easy. Where's my complicated, Bhavya? Oh, this was easy. Reduce fillings and tollins, exactly. End of amine, birth of biomolecules. Exactly. It reduces tollins, fillings. Next. Classify these into monosaccharides and disaccharides. देखो यार, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री का बहुत इजी है, बायोलॉजी का थोड़ा मुश्किल है। एंड क्यों करना जरूरी है? बिकॉज पहले ईयर की मेडिसिन में ना, सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा एक पूरा सब्जेक्ट होगा कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जब एक अभी चैप्टर 1, वहां पे एक पूरा सब्जेक्ट होगा, एक वन सब्जेक्ट फॉर अ सेमेस्टर बायोमोलिक्यूल्स। लिपिड का अलग होगा। दिस इज व्हाट अ स्टूडेंट टोल्ड मी हु इज डूइंग डॉक्टरी एट अ कॉलेज इन पंजाब। खैर, एनीवे, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। आर यू श्योर? सुक्रोज इसमें है ही नहीं यार। Ribose, 2-deoxyribose, maltose, galactose, fructose and lactose. बिल्कुल सही। फ्री फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, बहुत चीजें आप लोग बोल रहे हो, बट कैन यू टेल मी यहां पे बस समथिंग वेरी सिंपल। सुक्रोज इसमें नहीं है यार। विच ऑफ दीज इज मोनो एंड विच वन इज डाइसैकेराइड? यस, नो, मे बी मोनो 1 2 5 6। यार डाई बोल देते आसान नहीं होता सीखना, बट गुड जॉब। 1 2, अलग अलग कलर, 3 and 4, 5 and 6. Okay, I agree with lactose, I agree with maltose, but galactose is similar to glucose ना, एक CH2OH, मतलब it's just a swap on OH and H, is as far as I remember galactose and glucose के बीच में is similar to glucose, you just swap out one. I feel it should be lactose and maltose. Lactose is that thing जो फर्मेंट होके लैक्टिक एसिड बन जाता है, वही सोचिए ना, दही वाला चीज, दैट वाज लैक्टोज। सो उसमें टू थिंग्स, सो इट्स लैक्टोज एंड माल्टोज और माल्टोज, हाउ वी प्रोनाउंस इट। दीस टू आर डाइसैकेराइड्स, एवरीथिंग एल्स इज अ मोनोसैकेराइड, राइट? लास्ट का आंसर था, ओके, डाई इज माल्टोज लैक्टोज, या एग्जैक्टली, कूल। देवांशी, डाइसैकेराइड में माल्टोज एंड लैक्टोज, ओके, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस वन। सो आई एम गोना इरेज दिस 6 and write 6 with the green to show that it is a disaccharide. I'm going to change this up and say 4 over here, ठीक है? All right, let's go to the next question. अगला सवाल, what are the hydrolysis products of sucrose? मुश्किल सवाल यार। You just need to know what is sucrose made up of. कोई बोला था ना अभी ऊपर, sucrose also is a disaccharide. कौन से चीजों से बनता है? What is the linkage? This is 1,4-glycosidic linkage, ऐसा कुछ था, right? बट किस चीज का? एक तो ग्लूकोज होगा, दूसरा कौन सा है? Is it fructose? Is it something else? Is it galactose? क्या है? What is the second one?
Maltose, lactose, absolutely. Fructose and glucose, Bhavya, great. Which fructose? Alpha, beta, gamma? Alpha, beta, gamma, sorry. That was a bad joke. Alpha, beta, kaun sa wala? It's all D-glucose and D-fructose. Okay? Alpha D-glucose and beta D-fructose. ठीक है? Yeah? Easiest? Non-reducing sugar? Alright. Why is it non-reducing sugar? Because जो भाई साहब है यहाँ पे बैठे हुए हैं, it's connected. It's connected with this, what is this called? The first carbon, anomeric carbon, right? That's the one that's responsible for the reactions. Now, fructose is what? Furanose, furan ka ring. Yeah, this has got oxygen. It's got a 5-member ring. And this is, what is this? ये अगर ये furan है तो ये क्या है? What is this one? Beta fructose. Okay, great, Singha. If I think this is furan, right? This 5-ringy thing is called furan. What is a 6-membered ring called? What is this called? Inputs, please. Keep the chat flowing. Alpha D glucose, beta D fructose. Yeah, absolutely. Good job. मिल गया मुझे publication. Here you go. Pyranose. That's the publication for the FeNO thingy. Also, I feel like I should pin this comment. I should have done this in the starting because we are doing, what do you call this? Social media marketing. And I'm not doing the marketing part of it very well. रुको, कहाँ गया वो? Yeah, NEET की तैयारी. There should be a pinned comment. Let me do that right away. Pyron. All right, thank you. This is that NEET thing. Yeah, if you guys want to buy it, go ahead, use the code. Okay, let's go to the next question. Cool. Pyran, furan, etc., etc. Sound like there used to be a band called Duran Duran. Have you heard of it? It's yeah. That's how I remembered it. Anyway, what are the hydrolysis products of lactose? Again, lactose का अगर hydrolysis products पूछ रहे हैं, मतलब it must be a disaccharide. That's like a big hint right there. क्या होंगे इसके products? Here you have both 6-membered ring. एक होंगे भाई साहब ग्लूकोज. ग्लूकोज है कि नहीं? ग्लूकोज है. एक ग्लूकोज होगा. दूसरा क्या होगा? गैलेक्टोज. Pyranose. Yes, thank you. Pyranose is the right way of saying. Furanose, pyranose, sure, Pampa. Thanks for the input. Sunshine, Rajanya, Titraj, Devanshi, Snigdha, Piyush, everybody. Wow, all of you are so active. I love it. What are the hydrolysis products of, hello Tanas, what are the hydrolysis products of lactose, please? Glucose एक होगा ही. Glucose बस galactose. Sounds so cool. Galactose, like heavy thing. Galactose. Beta D galactose and beta D glucose. Okay, cool. What kind of link is this? Is this a 1-4 link again? Or is it something else? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah, 1-4 linkage hai. I'm doing this revision of which linkage and all of that because इन्हीं चीज में biomolecules यही 2-3 चीजें पूछी जाती हैं. What is the structural difference between starch and cellulose? Glucose, galactose, blah, 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 blah. Both have beta. Absolutely. Titra, Devanshi, Snigdha, Devanvita, and Sunshine. Good job. It is not a book error, Bhavya. I mean, I think the book has not been revised for 20 years because that link that I gave you, Bhavya, that's from 2001 का paper है. So, 2001 से पहले जो that information was correct. 2001 के बाद things change. That's science, right? You keep discovering new things. You have to update books. I feel they should update this. And ठीक है, अगर update नहीं भी किया book को, तो जेई में पूछना और गलत आंसर देना, that is a crime, यार. I don't know. That is my personal opinion. That is a crime. You should not do that to students. Can you imagine? एक स्टूडेंट जाके पेपर पब्लिश करता है, पेपर पढ़ लेता है, उसको लगता है कि ये सही आंसर है, जाके मार्क करता है, उसको मार्क्स नहीं दे रहे हो, उल्टा वो चैलेंज करता है, उसको काट रहा है. That's not cool. That is very uncool of NTA. Let's focus on this session right now. Starch और cellulose के बीच में मेन फर्क क्या है? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च तो बहुत बड़ा होता है ना. अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ऑल ऑफ दैट. अमाइलोज में क्या होता है? अल्फा लिंक होता है 1-4 का, राइट? स्टार्च हेलिकल एंड होल्ड I2 to so blue, but I2 not with cellulose. Snigdha. Okay. Wow. That's a very nice thing. मैं structural difference की बात कर रहा था. Helical, Snigdha. Okay. Let's keep that on the back burner. The main idea is that there's a 1-4 alpha link in amylose, and amylopectin में there's a 1-6 link. Okay. Hold on, did I say that right? Yeah, 1-6 link. मतलब ऊपर नीचे वाला. That's how you draw it. Or if you're not doing it ऊपर नीचे, you draw it like this. Okay, either way works. You will see this in textbooks ki either they will put things ऊपर नीचे one above the other to show this 1-6 link, or they can also do this sort of a thing. Okay, it means the same thing. Okay, this is amylose and amylopectin for starch.
सेलुलोज में क्या है? सिमिलर लिंक, बट देयर इज अ बीटा लिंक ओवर हियर. ओके, दैट्स द मेन डिफरेंस इन दिस. ठीक है. So you got to mug these things. Okay, alpha 1,4 link, alpha 1,6 link, alpha 1,4 and 1,6, 1,4 and 1,6 in case of myelopectin, and here there is a beta linkage. ठीक है, cool. Shall we go on to the next one? Yeah. Cellulose is a homopolymer. Okay, all right. Yeah, absolutely. सिर्फ उसमें एक ही चीज है. Cool. Good job, Rajan. Next one. We are rushing through this. Yeah. What happens when D-glucose is treated with following reagent? What is HI? HI is a really, really strong acid. What do these acids do? Well, acids can reduce stuff. No, hold on. Yeah, they can. Can they? Can they? Yes, they can, because they get oxidized. No, hold on. They should be oxidizing, not reducing. HI में I है -1 में, so it wants to increase. नहीं, oxidize होना चाहता है. What does this acid do? It's not oxidizing acid for sure, right? Iodine is in its least state. इससे और कम -1 और नीचे नहीं जाएगा, प्लस में जाएगा. It can go to +3, +5, +7. Okay, that's the way I remember it. HNO3, however, is an oxidizing acid. Okay, क्योंकि नाइट्रोजन 5 पे it can go to +3, it can go to +1. मतलब ये कम हो सकता है तो दूसरी को ऑक्सीडाइज कर सकता है. What does HI do? What does HI do? Easy, N-hexane. जो सोचना ही नहीं है, आंसर दे देना है. सही है. Hi Sridhata, how you doing? Amylopectin is branched. All right, thank you. Snigdha, Nigam, Bhavya, सबको याद है bro. No point of this discussion. That's lovely. Deepanvita, Snigdha, easy. तीसरा बोर्ड वाले सवाल. तनाज बलोच, hydrogen iodide, sure, but इसका आंसर will be hexane. Okay. So it removes all of these OH. मैं यही कहानी बता, reducing का आइडिया मैं बता रहा था. अगर याद रखें, कभी अगर याद करने में प्रॉब्लम हुई तो कुछ एसिड ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ जस्ट गो अंडरगो एन एसिड बेस रिएक्शन. इन दिस केस stuff gets reduced, oxygen goes away. What happens when D-glucose is treated with following reagents? The last couple of questions from this chapter. Last कैसे हो गया? Last है क्या? हाँ, last के 4-5 सवाल, but they're all linked. ब्रोमीन वाटर में क्या होगा D-glucose के साथ? कोई रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? N-hexane is absolutely right. Okay. तो यहां पे हेक्सेन बनेगा नहीं. वो पुराने पिछले वाला आप लोग बोल रहे थे दिवांशी पंपा. या ग्लूकोनिक एसिड. ये ग्लूकोनिक एसिड क्या बला होती है? व्हाट इज ग्लूकोनिक एसिड? सो माय अंडरस्टैंडिंग इज द एल्डिहाइड ग्रुप बिकम्स एन एसिड. एंड हियर इज अनदर रिसर्च पेपर इफ यू वांट टू रीड दिस. ये वाला मैंने सोर्स नहीं दिया बिकॉज दिस इज देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन दिस. दिस इज अ वेरी ओल्ड थिंग. द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाई आई वांटेड टू कोट अ रिसर्च पेपर ऑन दिस वन is that there's two ways of writing these, right? There are two ways of writing these, what should I call it? Hold on. Yeah. There are two ways of talking about these, right? There's a paper from 1932. And it's a simple idea. Only the aldehyde gets oxidized to COH. Now, this only works in the ring form, okay? The mechanism works from the ring form. That proves that, look, it exists in that hemiacetal form, okay? Not necessarily in that straight chain, जो आप लोग हॉथॉर्न फिशर प्रोजेक्शन आप लोग देखते हैं. इन द हॉथॉर्न प्रोजेक्शन वेयर यू सी HAWTHOR, हॉथॉर्न प्रोजेक्शन, I hope I'm pronouncing it right. There you see that it's a hemiacetal, and this a Fisher projection you see it as a straight thing, right? You just write CHO and COH. In the ring form, it's possible to get that. एक सिर्फ ये वाला ऑक्सीडाइज होता है ब्रोमीन वाटर में. ठीक है. ग्लूकोनिक एसिड बिल्कुल सही आंसर है. थैंक यू फॉर दैट. CHO, COH. Yes, Nigam. I like the lazy way of writing it. That's exactly what I wrote as well. Absolutely. Adipic acid, पीयूष, adipic acid क्या होता है? Adipic acid दोनों तरफ नहीं होता है. पीयूष, what is adipic acid? As far as I can recall, adipic acid दोनों तरफ. It's a dibasic acid, right? दोनों होगा. I don't think this is adipic acid. But when you add HNO3, what happens? HNO3 is highly oxidizing. What do you think will happen to this? Did Piyush read my mind? Did he know I was going to ask the next question, HNO3? Glucosaccaric acid. Wow, scary name. Glucosaccaric acid. Okay. Is that another name for? Okay. Oh, that is same as saccaric acid. Okay. ठीक है. Snigdha, yes. At ISC for a little bit. इसलिए आदत है पेपर पढ़ने की, कोई भी डाउट हो तो. Saccaric acid, yes. Thank you. Absolutely. What is that? What is a saccaric acid? Basically, दोनों COH हो जाते हैं.
Now it's bugging me. This adipic acid thing is bugging me. Rakesh, no bro, no, not on this channel. Adipic acid मुझे लगा था was the same as this saccharic acid, है ना, वही है. नो, एडिपिक एसिड अलग है. एडिपिक एसिड में सब जो है रिड्यूस हो जाते हैं. एडिपिक एसिड इज CH4 CH2 whole 4 COH. That is adipic acid, right? वही मैं सोच रहा था. हैप्पी होली टू यू एज वेल सोमेश. सैकैरिक एसिड बिल्कुल सही है. या सैकैरिक एसिड इज एब्सोल्युटली राइट. गुड जॉब ऑन दैट. कूल. यस निगम, नहीं आई थिंक पीयूष ने ऊपर एडिपिक एसिड बोला था. सो आई वाज वंडरिंग वेयर एडिपिक एसिड बन रहा था. इन आवर डिस्कशंस आई डोंट थिंक एडिपिक एसिड कहीं बना है. या पीयूष, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. कैन यू एक्सप्लेन दैट बॉन्ड ऑर्डर प्लीज? श्रेयता व्हाट? किस चीज का बॉन्ड ऑर्डर? आई डोंट फॉलो. Why have three people in the last 2 days have asked me to explain bond order? Is there some test that's going on which requires you to know what bond order is? Anyway, 2 people asking me about this. I'll give you the link to this because you have not obviously seen the link on my description right here. What is the peptide linkage? आप लोग बताइए. While I give my good friends who are asking for something, subatomic particles. What is this, bro? Oh no, I should not have closed that. That was my lesson plan for the bridge course. No. Okay, it shall open again. Don't worry. Where is the spreadsheet? Okay, Srilata. Here you go. OMG, what hack? Srilata, that's the link to my sheet. You can go there, check out chemical bonding. जो वीडियो देखना है देखो. Peptide linkage, OMS gap. That's a trick. Bhavya, what is OMS gap? Sounds scary. I have a simple way of remembering this. Dehydration, guys. Dehydration. You have an acid and you have an amine. इनमें से OH निकलेगा, इनमें से H निकलेगा. That's an amide linkage. That's it. Yeah? Which is same as peptide linkage. Basically that. Cool? CONH, yeah. Sunshine, that sounds scary. Dehydration से याद नहीं कर लगते. मतलब मुझे तो ज्यादा सिंपल लगता है कि CO ग्रुप में से CO does not react, the OH reacts. That's the main difference. Normally, the reaction of carbonyl group का reaction ये होता है कि C double bond O breaks or something, but यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, OH निकल रहा है. अगर C double bond O होता तो O निकल के N आता. That's not what's happening. Simple dehydration हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? OH from COH and H from the amine. That's a peptide linkage. All right, cool. An example of a couple of amino acids reacting and giving you a complex one. सुपर डुपर कॉमेडी वाले मूड में. ऑलराइट, कूल. यस, एब्सोल्युटली राइट तीर्थराज, बिल्कुल सही. या सनशाइन, इट्स ओके. इफ यू थिंक योर बायोलॉजी इज बैड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? मैं कहां पे हूं? No, you are all great at biology. How do you explain the amphoteric behavior of amino acids? Amphoteric behavior, zwitter ionic species. Here is an amino acid. अब इसका तुम लोग amphoteric behavior कैसे explain करोगे? Shall I help you out with this? I don't think there's much to talk about here. Right? Let me talk about it. What happens here? This can exist in this funky form, right? In this weird form where you call it a zwitter ion. What happened here? This H decided to go there? Maybe. But actually, what happens is कि acidic और basic medium में दोनों में it forms species that are stable. So, if I give it an acid, what will happen? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे. इफ आई गिव इट OH माइनस, व्हाट विल हैपन? ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा और ये नेगेटिव यहां पे स्टेबलाइज हो जाएगा. दिस इज जस्ट लाइक C2H5OH प्लस Na. अगर आप ऐड करो तो C2H5ONa हो जाता है और NaOH डाल लो ना. NaOH डाल के यू मेक इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. C2H5OH इज अ वीक बेस, बट C2H5OH इन NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? वही यहां पे हो रहा है. O माइनस स्टेबल यहां पे बैठ रहा है. Similarly, in reactions of amines where you have acidic medium में डालो so it forms a plus. That's the main difference. This is how it behaves both as a acid and a base. समझ गया मैं भव्या. OMS gap is for adipic acid where each letter is cool. Got it, Bhavya. Thank you. Sulfonation.
Sulfonation. Okay. Different pH, different behavior. Exactly. And interestingly, there's an entire bit of क्या बोलते हैं एक पूरा सरफेस केमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन आई नो इट्स बीइंग रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस बट ये डिटर्जेंट्स का जो हो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पीस पे बेस्ड है एंड दैट फाउंड फाइंड्स वेरी इंटरेस्टिंग यूजेज इन द सर्फैक्टेंट्स इंडस्ट्री. अब आई वोंट टॉक टू मच अबाउट इट बिकॉज आई नो आप लोग को इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है. ऑयल तेल निकालने में बेसिकली हेल्प करता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है ताकि आप लोग तेल निकाल सको या फ्रॉम वेरी वेरी स्कैरी प्लेसेस जहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वहां पे जाके बाय यूजिंग दीज सब्सटेंसेज that have both of these things that change their behavior on pH, you can take that out just in short. Okay, how are vitamins classified? Ending the session on a very easy question. How are vitamins classified? Name the vitamins responsible for the coagulation of blood. Bataiye. Very simple question to end the session with. I like it. I like the thing. I've got missed calls from potential fraud and suspected spam. Man, you gotta love Android. This could be like an ad for Android. Oh my god, this is brilliant. Gotta take a screenshot of this. Vitamin K is blood. All right. No. Notification went away. I'll take a screenshot. Here. K. Water soluble and water soluble. Oh, water insoluble. Divyanshi. Yes. Thank you. Water and lipid. You guys are giving such awesome answers. What are the fat soluble ones? ADEC. How do you remember the fat soluble कौन सा है, water soluble कौन सा है? You get these tablets. I'm preaching to the choir. I know that you guys are all biofuel. You don't need these tricks. For the engineering kids, I tell them कि देखो विटामिन सी की टैबलेट्स आती है, मतलब तुम खा सकते हो, तो वो पानी वाला soluble होगा, ठीक है? So B or C are water soluble and ADEC are fat soluble. That's what I tell them. And of course, you guys are right. K is responsible for clotting. Oh, एक last सवाल. What's the difference between a nucleoside and a nucleotide? Dark side. Very easy. This came in board. All right. Fat and water soluble. This also came in JEE main. ये पेपर JEE main, ये सवाल JEE main में भी आया था. Excuse me. This ADEC, ADEK and DNC वाला. I'm not kidding. You may have seen. I made a short on this ना recently. NEET वाले चैनल पे. I mean हमारे चैनल NEET क्या इसी चैनल पे शॉर्ट्स में जाके देखो. मेरे शॉर्ट्स देखो भाई ऐसे सवाल आ रहे हैं JEE main में. I did that. Vitamin C and K are water soluble. K are water soluble. K is fat soluble. Fat केड़ा. Okay, स्निग्धा. That's cool. But ये बताओ, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क होता है? Side or tide. Here's how I remember it. Right? T comes after S, so T must have more stuff. Literally that. What more stuff? You have sugar, you have base, and you have acid. Acid मतलब कौन सा? PO4 3- specifically. Phosphate, right? Base plus sugar plus nucleoside plus phosphate nucleotide. Sunshine दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड. Yes, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज न्यूक्लियोटाइड. बिल्कुल सही. मग वाला सवाल. Good job. That's it. Okay, so nucleoside looks like this. Replace this with a phosphate, not replace this, add a phosphate group to here. ये H को हटा दो. Make this, when you react this with an H3PO4, एक हाइड्रोजन और ये निकल जाएंगे. What you have is this. Yeah, H from this and OH from this combine, dehydration as usual, and you get the phosphate group, which is nucleoside. All right, thank you so much for your time. And now let's talk about NEET ki tayari for like a minute. I won't talk about too much. Let's talk about the most important thing. This awesome graphic. I just love that electrocardiogram. I mean, I can't tell you how much I like that. And then there's that stethoscope also. And stethoscopes are really expensive. I remember my friend, when he bought a stethoscope, it cost like some 10K bucks, man. And this was like 10 years back. Stethoscopes are expensive and they're really cool. But anyway, we're going to talk about April 18th say 24th. We're going to be doing these sessions, NEET ki tayari. Yeah, 1.5 hour sessions every day. You can interact with us. You can just turn on a mic and talk to us, turn on a video, have a chat. And you have app access throughout all this till the exam. Exam कब है? 5 मई को है ना? Election में से कोई बदलने नहीं वाला ना? 5 मई को ही है. And links in the description. You can get it. It's also in the pinned comment. Use both of these codes. Yeah, my name, Abhishek's name, Ankita's name. किसी का भी नाम डालो. With 500, you'll get 500 bucks off and get 10. Use both of these please to get the codes. मिलते हैं. कब मिलेंगे हम लोग? Thursday को मिल रहे हैं. We're going to do practical chemistry. मजा आएगा. ठीक है? Practical chemistry के लिए मिलते हैं तब. See you all. Bye. Have an awesome one. Tata. Oh, by the way, if you want more practice, exemplar, हम लोग यही टॉपिक कर रहे हैं 6:30 बजे. See you. Bye. Tata. Yeah. Absolutely, Singha.
सी यू ऑल, बाय, टाटा टाटा टाटा।